Hello students, so today we'll be discussing about applications of transgenic animals. In our first class we discussed about how these transgenic animals are developed. Now we'll move towards applications. So as it has been known that development of transgenic animals, it has been major breakthrough or accomplishment in the field of medical biotechnology. So today we'll discuss the use of these transgenic animals in different fields in order to know the importance of this technique transgenesis. Okay, so the first field is medicine. We'll be discussing its importance in medicine. So the first application is we can use these transgenic animals as disease models, which we have been discussing through the first class. So these animals, they have been used to mimic several human diseases. So the gene for disease, that is the gene that is responsible for disease development in humans, is made to express in these animals, and then see like whether it mimics the behavioral or physiological changes that is occurring in the humans for that particular disease. And if it shows it, then it is used as a model for studying that particular disease, like what all changes, the mechanism of physiological changes that are undergoing in that particular disease, or what all genes are responsible, or the drug testing, like what all changes are occurring by administering a particular drug in order to cure that disease. So various animal models of various diseases, various human diseases like Alzheimer's, cancer, AIDS, Huntington's, Parkinson's, they have been developed. Okay, so through this, the transgenic animals, they have enabled scientists to understand the role of genes in specific disease. And mice, it has been used to model human disease more commonly because of its physiological, anatomical, and genomic similarities to humans. It is very much comparable at all these levels to humans. Okay, and the next application is xenotransplantation. So what xenotransplantation is? Firstly, xenotransplantation is the transplantation of living cells, tissues, or organs from one species to another. अभी तक you must have heard organ donation कि मतलब we what is done in organ donation is organ from a healthy individual is taken, and it is administered, or it is inserted into a नॉन हेल्दी ह्यूमन जिसका भी वो पर्टिकुलर ऑर्गन इज डिफेक्टिव, तो हम एक हेल्दी इंडिविजुअल से द ऑर्गन इज टेकन एंड इट इज़ प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन इसमें क्या होता है कि सेम स्पीशीज़, मतलब हम ह्यूमन का ऑर्गन लेके ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. बट इन जीनो ट्रांसप्लांटेशन व्हाट इज़ डन, द ऑर्गन डोनर इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़ एंड द ऑर्गन रेसिपिएंट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़. ओके, so the cells, tissues, or organs, these cells, these tissues or organs which are transferred, they are known as xenografts or xenotransplants. Okay, so as the stats say, patients die every year for lack of a replacement heart, liver, or kidney. Transgenic pigs may provide the transplant organs needed to alleviate the shortfall. So if this comes into एक्शन, लाइक मतलब अगर ये पूरा अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, सो इमेजिन व्हाट लेवल ऑफ बेनिफिट्स टू ह्यूमन हेल्थ इट वुड प्रोवाइड. ओके, क्योंकि अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स डेवलप कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई होगा डोनर ऑर्गन्स का. ओके, so this is the other application. The third one is nutritional supplements and pharmaceuticals. So nutritional supplements basically are manufactured products which are intended to supplement diet. Like these products, they contain the essential amount of vitamin, fats, or proteins needed by our body. So and many other pharma substances also, like insulin, growth hormone, and blood anti-clotting factors. These can also be obtained from milk of transgenic cows. So what is done in order to manufacture these nutritional supplements
or pharmaceutical components is the gene for the gene for these which expresses these nutritional supplements or pharmaceutical components. They are coupled with the promoter, with a promoter or a DNA signal that promotes the expression of these genes in the memory glands. ओके तो हम क्या करते हैं कि एक प्रमोटर के साथ इन्हें एक्सप्रेस कर देते हैं इन जीन्स को, तो फिर ये जीन्स जो हैं ये सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स में ही एक्सप्रेस होती हैं, एंड देन द पर्टिकुलर प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन बन रहा है वो मिल्क के साथ इजेक्ट होता रहता है. ओके तो और फिर मिल्क से हम वो प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दैट इज़ मेड इन यूज़. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है उसका हमारे पास बहुत कंटिन्यूस सप्लाई होता है, क्योंकि मिल्क जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई में ही वी गेट फ्रॉम एन एनिमल. और एंड दिस इज ऑल्सो हार्मलेस टू एनिमल एज मिल्क आर आउटसाइड द मेन लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ एन एनिमल. तो इससे एनिमल को कोई हार्म नहीं हो रहा है. फाइन. The other application is human gene therapy. So what is human gene therapy? What is done in it is, human gene therapy involves adding a normal copy of a gene to the genome of a person carrying defective genes responsible for disease development. तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफेक्टिव जीन, तो उससे क्या होगा, उसमें डिजीज़ डेवलपमेंट होगा. लेकिन जीन थेरेपी में किया जाता है कि एक नॉर्मल जीन उसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम एक नॉर्मल जीन प्लेस कर देते हैं तो इट विल रिटर्न बैक टू इट्स हेल्दी स्टेट. और जो अब नॉर्मल जीन हमने इंसर्ट की है दैट पर्टिकुलर जीन इज़ फॉरेन टू वो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, तो वो जीन हम क्या बोलेंगे, उसे ट्रांसजीन हमने इंसर्ट कर दी है. ठीक है. अब ह्यूमन जीन थेरेपी के काम करने के देयर आर वेरियस वेज. तो जो तीन कॉमन मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डू दिस ह्यूमन जीन थेरेपीज. पहला इज़ रिप्लेसिंग अ म्यूटेटेड जीन दैट कॉज डिजीज़. रिप्लेस कर दिया जाता है उस जीन को, कि उस जीन को हटा के एक हेल्दी जीन वहाँ पे लगा दी. The second one is inactivating or knocking out a mutated gene, कि वो जीन को हटा दिया, disease gene is removed but no new gene is placed there. Okay, या उसे inactivate कर दिया. And the third one is introducing a new gene into the body to help fight a disease. तो जो disease gene है उसे तो रहने दिया, but we inserted a new gene जिसका product will help to nullify the effect that are caused by the disease. Fine. So इसका the first case of gene therapy was in 1990, when a 4-year-old boy with severe combined immunodeficiency syndrome was cured with this gene therapy technique. And it is in the developing phase right now, this technique. Okay, other application is vaccine testing. So when vaccines for a particular disease is made, तो सीधे ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होते हैं, बिकॉज यू नेवर नो लाइक इफ़ द वैक्सीन कैन हैव वेरियस लीथल साइड इफ़ेक्ट्स टू. तो क्या होता है कि पहले नॉन ह्यूमन डिज़ीज़ मॉडल्स हम लेते हैं. सो जो हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप होता है उसमें हम बहुत लाइक माइस या रॉडेंट्स, स्मॉल एनिमल्स लेते हैं. देन इन नेक्स्ट स्टेप वी गो टू डिजीज प्राइमेट्स, लाइक फिर हम जैसे डॉग में, मंकी में, इन सब में टेस्टिंग होती है. ठीक है. सो नॉर्मली non-human disease primates are often the model of choice to test human vaccines against many pathogens. However, due to their limited accessibility and high housing costs, non-human primates are only used at late stages of development for selected pathogens. Instead, transgenic rodent model are routinely used for preclinical vaccine testing. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, rodents, फिर उसके बाद we goes to non-human primates. ओके तो क्या किया जाता है ना, जब वैक्सीन टेस्टिंग होती है, सो वेरियस पैरामीटर्स आर एक्सेस, लाइक कि वेदर द वैक्सीन इज़ सेफ और नॉट, कि उसका कोई लीडिंग साइड इफेक्ट तो नहीं है. एंड द अदर वन इज़ कि
whether it is providing any protection against the pathogen just against that particular vaccine is developed, or the optimum dose of vaccine that provides the results, that provides the protection, the optimum level of protection that is needed to fight that particular pathogen, and the route of delivery, how the vaccine should be administered. There are various routes for administering a vaccine. ओरल वैक्सीन होती है जैसे पोलियो की, और इंट्रामस्कुलर हम कुछ वैक्सीन दी जाती हैं, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस वैक्सीन दी जाती हैं. सो व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रूट ऑफ डिलीवरी, मतलब किस रूट से अगर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हमें जो है मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा. एंड ऑल्सो कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, जो आफ्टर वैक्सीनेशन जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिव होता है, तो किस डोज में, या व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, या कितनी, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. सो नॉर्मली ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं वैक्सीन टेस्टिंग में. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल दीज पैरामीटर्स इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑल दीज नॉन ह्यूमन डिजीज मॉडल्स में ऑब्वियसली all these parameters are tested. Okay, so now we'll see the application of transgenic animals in agriculture field. So the first one being breeding. So what is normally used, what is the नॉर्मल टेक्निक इज़, डे टू डे टेक्निक ब्रीडिंग के लिए, हाई क्वालिटी ब्रीड्स के लिए क्या किया जाता है, व्हाट फार्मर्स डू, दे टेक अ हाई क्वालिटी male and a high quality female. What I mean by high quality is the particular animal with good strength, good reproductive quality, and it should have a high growth rate and increased milk. It should produce increased milk production. It should have. So male and female with such traits are taken, and then they are bred, and then we'll get the offsprings which exhibit such traits. So this technique, this is known as selective breeding, which is in common practice. But with transgenesis, with the advent of transgenesis technique, it is made possible to develop traits in animals in a shorter time and with more precision. यही सारे traits हम बहुत shorter time में और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसजेनेसिस टेक्निक हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक एनिमल में. क्या किया जाएगा कि कोई भी जो भी है ट्रेड्स हैं, इनकी ट्रांसजीन वुड बी इंसर्टेड, हम एक फर्टिलाइज्ड वन सेल एम्ब्रियो लेके एक जीन फॉर दीज ट्रेड्स जो भी चाहिए वो इंसर्ट कर दी उस वन सेल एम्ब्रियो में, एंड देन इट इज़ मेड टू डेवलप इन अ फॉस्टर मदर, एंड इट्स डेवलपमेंट इज़ इनिशिएटेड. तो क्या होगा, एंड में हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, इट विल कंटेन ऑल दीज ट्रेड्स. ओके, सो the other application is quality of the products that is produced by these transgenic livestock. So various transgenic cow exist that produce more milk or milk with less lactose or cholesterol, and various pigs and cattle have also been produced by this transgenesis technique that have more meat on them. Okay, and also sheep that grow more wool are produced. So with such products, such products, they provides nutritious and cost effective animal products. These animal products, they are of increased nutritional quality, and they are cost effective. Okay, so other application is formation is development of disease resistance livestock. So this genetic modification of livestock, it enhances animal welfare by producing healthier animals. So scientists, they are attempting to produce disease resistance animals like influenza resistant pigs, but abhi kya hai na, very limited number of genes which are responsible for disease resistance, they are known in with disease resistance in farm animals, basically they are known. So this technique is also abhi in its developing phase. Okay, so applications of transgenic animals in industrial fields. So here we have mentioned an example of a product that is of very
very extraordinary properties basically. So in 2001, two scientists at Nexia Biotechnologies in Canada, what they did, they made to express, they expressed the gene of spider that is responsible for silk production in it, जो वो अपने वेब्स बनाने में यूज़ करता है ना, तो उसका जीन स्पाइडर से निकाल के they made to express that particular gene in lactating goats. उसने lactating goats में वो gene, लैक्टेटिंग गोट्स जो मिल्क वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं, तो लैक्टेटिंग गोट्स में वो जीन एक्सप्रेस करा दिया. नाउ द गोट्स बिगिन टू मैन्युफैक्चर सिल्क अलॉन्ग विद देयर मिल्क एंड सीक्रेट टाइनी स्ट्रैंड्स फ्रॉम देयर बॉडी इन लार्ज अमाउंट. तो अब क्या है, जो मिल्क उसमें इजेक्ट हो रहा है उसके साथ सिल्क भी इजेक्ट होता है, that from that particular goat. And these extract polymers, they are extracted and from the milk and weaved into thread. तो जो ये पॉलीमर जो इससे बनता है, जो हम इसके फिर मिल्क से प्योरीफाई करते हैं, इट इज़ डेवलप्ड अंडर अ ट्रेडमार्क नेम बायो स्टील, इसे बोला जाता है. ओके. और जो ये पॉलीमर है इसकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ हैं. दिस पॉलीमर, दिस इज़ रिपोर्टेडली 7 to 10 times as strong as steel if compared for the same weight, and it can stretch up to 20 times. ठीक है. और इसका इतना वेरी हाई रेजिस्टेंस टू, इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर. लाइक ये अपना प्रॉपर्टीज़ नहीं लूज़ करता है फ्रॉम, अगर -20 में भी है या 300 डिग्री में भी है. इसका जो टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम -20 to 300 degrees Celsius, it does not lose its properties. This is a very high range of temperature. Fine. And then this polymer, this biosteel, it is used in various industrial purposes, like it could be used in military uniforms, in medical microsutures जो टाँके लगाए जाते हैं. Okay. And tennis racket strings. Okay. So the other application is microorganisms have been engineered to produce a wide variety of proteins. तो इसमें क्या करते हैं कि हम ट्रांसजीन, क्या किया जाता है, ट्रांसजीन जो है, कोई भी आपको अपना जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आप चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कराना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोडक्शन जिस भी आप प्रोटीन का चाहते हैं, सो वो पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, उसका ट्रांसजीन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया जाता है. एंड देन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर हार्वेस्टेड. पहले they are allowed to replicate in a huge number. Okay. And then this protein, the protein of our interest, उसने protein of our interest is made inside that particular organism. तो हम protein of our interest is purified from them, and then it is used in various industrial chemical reactions. So one example of such a protein is chymosin enzyme, chymosin enzyme. So this chymosin enzyme, in natural condition, it is present in calf's stomach, and it is used, and it is responsible for conversion of milk into cheese. Okay. So in industrial purposes, what is done, like scientists have developed transgenic yeast which to grow this chymosin enzyme, and then this enzyme is harvested from those yeast, and it is used for making cheese in industries. Okay, so that's it for the applications. There are many more applications, but it is majorly, they have been characterized into these three fields. Okay. Medicine, agriculture or livestock, and this industries. Okay. So here in this slide, it is like a summary slide, like why transgenic mouse models are used for human diseases. So there are reasons. Firstly, they model the development of human disease in a controlled environment. Second one is, see the right bottom one, it replicates specific characteristics, symptoms or pathology of the disease, which is a very important important feature, कि मतलब it mimics all the characteristics or symptoms जो भी humans में होते हैं in a particular disease that are also seen in mice models. So it is possible to test new drug treatments and get faster results. drug treatments आप देख सकते हो कि जो जो symptoms हैं उनमें क्या क्या effect आ रहे हैं. ठीक है. And it provides target specific genes to study. So that is it for today. Thank you.